Yes, That's I nice. believe many Raghav, of the us stage is have all joined. yours. So, yeah, I'll be starting, okay? The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. And the willingness to learn is a choice. A vibrant evening to the gathering of financial minds. I, Raghav, your host, welcomes you all on the behalf of Finance and Investment Cell, Kirodimal College, to the day 3 of Young Learners Finance Fellowship Program. Finance is not just a word, but a world of infinite learnings. And all these sessions aim to introduce you to this world of finance. Believe me, receiving such valuable insight and exposure at this stage is a unique opportunity that not everyone gets to experience. It's a chance to expand your horizons, gain knowledge, and build connections that can have a profound impact on your future. Never think twice when it's about working hard, क्योंकि रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी. And I promise you that after the fourth day, you will be an exception to your batchmates. So, with this motivation, let us take our third dive in the pool of finance with our speakers Bhavya Agrawal and Aditya Jindal. Before I hand it over to the speakers, I want to inform all the participants to stay still the last because we have a special announcement for you all coming at the end of the session. Over to the speakers. Hello everyone, I am Bhavya Agrawal, currently pursuing BCom Honors and I'm in my second year. And I will be your speaker for this session along with Aditya Jindal. So, as you all know that today's session is on personal finance and you have already known about the basics of finance as well as the stock market and investments. Now comes the big question. Now, how to manage your own finance? You have invested, you have learned about the basics, banking, you have learned about how to invest money, but there are a lot of other avenues available in the market, in this financial industry, which you must be aware of. So let me just start with a small question. What, according to you, is personal finance? What are the components of it? Uh, Please answer in the chat box. I would really love if you all go ahead. Budgeting, creates a thought. Any other thing? Managing your income, managing your own wealth, saving, investing, managing your own finance, saving, investing. Great, great, guys. You all are going great. So, as mentioned, personal finance is nothing but just a way of managing your own finance in a way that you are able to save your money, budget it, invest it, and move it into a form that it becomes a greater asset for you over time. And not only for you, it involves your family, your kids, your brother, sister, parents as well. So, personal finance is not just about you, it is a collective thing that involves your families as well. So, just before I mention, I would just like to mention some of the components of personal finance that we will be taking up today. That will include insurance, taxation, both income taxes, GSTs, etc. Along with that, we will be taking up some topics like loans, credits, etc. So, with this, we would like to start the session with the topic insurance. So, I guess all of you must be aware what insurance is, how it works. So, just for a brief introduction, I would like to add that insurance is just nothing. वो एक एग्रीमेंट होता है जो कि एक इंश्योर दैट इज अ इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योर्ड जो कि एक फैमिली होगी इंडिविजुअल हो सकता है किसी को भी प्रोवाइड करती है सो इट्स अ लीगल एग्रीमेंट जहाँ पे क्या हो रहा है जो इंश्योर्ड है वो एक रेगुलर अमाउंट प्रीमियम के फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी को देता जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी मेक श्योर करती है कि जब भी कोई एक अनफॉर्चुनेट इवेंट या एक टर्म क्लोज हो तो उस टाइम पे वो एक प्री डिटरमाइंड सम इंश्योरेंस पॉलिसी का वो इंश्योर्ड को मिले against the premium that he is paying. So this is the basic functioning of insurance and this is how it works. So जैसा मैंने बोला कंपोनेंट्स क्या होंगे इंश्योरेंस के मैंने बोला प्रीमियम के बारे में मैंने बोला पॉलिसी के बारे में सो प्रीमियम इज जस्ट नथिंग इट इज अ फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो कि इंश्योरेंस को लीगल बनाती है बाइंडिंग बनाती है सो प्रीमियम इज नथिंग जो भी आप एक रेगुलर इंटरवल पे मंथली ईयरली बेसिस पे किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक अमाउंट पे करते हो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट बिकॉज
all the families, your parents must be having some kind of insurance and they must be paying some kind of premiums on it, right? Then comes policy limit. So policy limit majorly general insurance और health insurance पे apply होती है. और यहाँ पे the thing is that compensation amount of loss पे depend करता है. So as a health insurance you must see कि जो आपकी health condition है या जो amount of treatment है, जितना treatment हुआ है, जितना आपकी health condition deteriorated है, उसी बेस पे आपकी पॉलिसी लिमिट सेट होती है, उसी बेस पे आपको कंपेंसेशन मिलता है. सो दिस इज द पार्ट विच प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरेंस वर्किंग. नेक्स्ट कम डिडक्टिबल. सो डिडक्टिबल भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है. डिडक्टिबल सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस होती है जो कि एक इंश्योर्ड को बियर करनी पड़ती है इवन इफ यू आर हैविंग इंश्योर्ड. अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज तुमने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया, इसका तुम्हारे पास इंश्योरेंस कवर था, बट तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था दैट इन केस ऑफ एनी इंजरी या फिर कोई भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन के टाइम पे 10,000 रुपीज डिडक्टेबल फॉर्म में होंगे. तो वो डिडक्टेबल से क्या होगा, वो 10,000 रुपीज इंश्योर्ड को खुद अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे हॉस्पिटल को, और जो बाकी बचा बिल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी लेगी. लेट्स सपोज अगर 50,000 का बिल आया, उसमें 10,000 का डिडक्टेबल का पोर्शन था, तो 10,000 पहले मैं अपनी पॉकेट से पे करूंगा बिकॉज मेरा इंश्योरेंस हो रखा है. स्टिल आई विल पे इट बिकॉज वो मेरी पॉलिसी में लिखा हुआ है ना. और जो बाकी बचा 40,000 होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, राइट. सो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हैव अ यस इन द चैट. Great, great, great. Okay, why is deductible needed? Just to like the edit, like there are a lot of insurance policies which work uh, in this way. So what happens is कि जैसे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है. उसमें इंजरी का लेवल होता है, उसमें एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि इस बेस पे कंपेंसेशन मिलेगा, इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई डिडक्टिबल यूज किया जाता है सो दैट इंश्योरेंस कंपनी के पास भी एक बैक ऑफ रहता है. एंड बिकॉज इट्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस की बात होती है मेजरली इसमें, दिस डजंट अप्लाई टू थिंग्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, राइट. सो नेक्स्ट वर्क इज हाउ डज एन Raghav just move back. Yeah. So how does an insurance? So it's basic. You just need to buy an insurance policy. It can be life insurance, it can be motor insurance, it can be health insurance. तुम्हें रेगुलरली प्रीमियम्स वगैरह पे करने पड़ेंगे. वी विल बी कमिंग टू मोटर इंश्योरेंस फॉर श्योर. सो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रीमियम्स तुम पे करोगे. उसके बाद कोई भी अनफोर्सिन इवेंट, थेफ्ट, फोर्जरी जो भी है वो हो रहा है या फिर टर्म जो क्लोज हो रहा है, उसके बाद जाके यू कैन मेक इंश्योरेंस क्लेम विद योर होल डॉक्यूमेंट्स एंड योर आईडी, राइट. Raghav, you can move to the next slide. So इसी के साथ we will now be discussing the types of insurance. So there are three most important types of insurance. Those are health insurance, life insurance and auto insurance. सबने इन चीजों के बारे में सुना होगा. Most of you will be aware about it. सबकी families में parents ने ये सब ले भी रखे होंगे. So I would just give a brief introduction about it. Life insurance is nothing but एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली. वो जो आप जब आप एक इंडिविजुअल लेट्स सपोज उसके डेथ के केस के बाद उसकी फैमिली को जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस. सो लाइफ इंश्योरेंस दो चीजें कवर करती है. लाइफ इंश्योरेंस दो चीजें कवर करती है, दैट इज जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आफ्टर योर डेथ. एंड ऑल्सो अगर एक टर्म खत्म हो गया लाइफ इंश्योरेंस का एंड यू आर स्टिल अलाइव, सो उस केस में क्या होगा, आपकी ओल्ड एज के लिए वो एक फाइनेंशियल रिजर्व, एक सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकते हो. सो दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. कमिंग टू द हेल्थ इंश्योरेंस. सो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम हैवी एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड इन ऑपरेशंस एंड ट्रीटमेंट्स. सो एज वी ऑल नो कि यार आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हेल्थ ट्रीटमेंट इज जस्ट एक्सपेंसेस आर वे टू हाई. हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज्यादा होते हैं. उस केस में अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन आई, सो वहां पे अपनी पॉकेट से पे करना लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ में रुपीज को पे करना, इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी टास्क फॉर इंडिविजुअल. सो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है. तुम रेगुलरली प्रीमियम्स पे करो और जब तुम्हें जरूरत आई तुम एक साथ एक बहुत अच्छा सम यूज कर सकते हो एंड तुम्हें सिक्योरिटी रहती है.
सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. ऑटो इंश्योरेंस में क्या होगा, बेसिक है, जो आपके व्हीकल्स वगैरह है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है. कोई भी आपके एक्सीडेंट्स वगैरह हुए तो उस केस में आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है ऑटो इंश्योरेंस से. सो एज यू ऑल नो कि आज अभी गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट है ऑटो इंश्योरेंस को लेके. द व्हीकल्स विच आर नॉट हैविंग इट उस पर काफी स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट. एंड आई थिंक इट इज अ मैंडेटरी थिंग बिकॉज व्हाई इट्स सो, बिकॉज आज के टाइम पे द रोड्स आर फिल्ड विद व्हीकल्स, कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा. सो एक्सीडेंट्स का नंबर जो है उस वजह से बढ़ भी जाता है. सो आई गेट इसी वजह से क्या होगा, मोटर इंश्योरेंस की नीड जो है वो बढ़ती रहती है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो इट्स अ मस्ट हैव. As you mentioned, marine insurance and all. So, as we are covering the financial part, personal finance part, so marine insurance is more towards the commodities. So, it doesn't include in the personal finance itself. So, yeah. So, that's all towards the types of finance. We will be taking up the doubts at the end of the session for sure. And here's a wrap up for the types of insurance. I hope everything is clear to all of you. If yes, then spam the chats. Great, great guys. Great, great Shubham. Great Siddharth. Great Yogansh. Great, great. All right, guys, fair enough. So, Rahab, can you move to the next slide? Okay. So, guys, इंश्योरेंस हो गया. अब नेक्स्ट वी मूव टू द क्रेडिट पार्ट. नाउ क्रेडिट एक ऐसा वर्ड है जो आप में से आई गेस सुना तो सबने होगा. आई कैन प्रिज्यूम दैट बीइंग कॉमर्स बैकग्राउंड 11 12 स्टूडेंट्स, क्रेडिट वर्ड सुना तो आप सबने होगा. बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली अवेल्ड क्रेडिट? आई वांट टू नो दैट. ओके, ऑलराइट. सो yes, of course, peer to peer counts. Credit is a credit, right? Right. So we can just take an example here. Like आप में से आई गेस सभी ने ऐसा किया होगा कि इस मंथ की पॉकेट मनी खत्म करके नेक्स्ट मंथ की आधी पॉकेट मनी जरूर सभी ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से जरूर मांगी होगी, राइट? इफ यस देन यू अवेल द क्रेडिट. अब क्रेडिट लेने का पर्पस कुछ भी हो सकता है, राइट? आपको कोई परचेज करनी है, जस्ट दिस, राइट? ओके. सो या आई वाज सेइंग कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, बी इट फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर आइटम, फॉर लाइक क्रिएटिंग अ गुड क्रेडिट स्कोर. दिस थिंग विल कम इन डिटेल आगे सेशन में, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि क्रेडिट स्कोर आपको तभी मिलता है जब आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री होती है, राइट? नाउ आप क्रेडिट आप इसलिए भी ले सकते हो कि आपने कोई पहले बोरो करा हो उसको देना है, लाइक दैट इज समथिंग अ डेट ट्रैप, बट वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दैट. अब टाइप्स ऑफ लोन में अगर आप देखो, लोन और क्रेडिट वर्ड इज यूज्ड इंटरचेंजेबली लाइक जनरली. सो एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, ओवरड्राफ्ट, लाइक ओवरड्राफ्ट फॉर बिजनेसेस, राइट? व्हीकल लोन, all these things come. But आप एक चीज नोटिस करोगे कि these credits are usually for making expenditures. But have you ever heard of the name Robert Kiyosaki? Anyone? Okay, only one, two. Yeah, real estate then. All right, that's great. So using debt to make money, to create wealth, is something which we are going to cover, right? So here's an example how you can actually use debt to create money, to create your wealth. We take an example. For example, you borrow some money from a private lender. एक private lender के पास आप गए and you borrowed some money. उससे you purchased a house or a real estate thing, for example. Now उस real estate को you keep mortgage in a bank and take loan of that value to repay your the private lender. इससे क्या होगा, आपका जो प्राइवेट लेंडर का लोन था वो खत्म हो गया, बैंक का लोन स्टैंडिंग है, एंड नाउ यू पुट दैट रियल एस्टेट ऑन रेंट. लाइक दिस मॉडल वर्क इन यूएस वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पे
अगर आपको पता हो वहाँ पे जो आपका ईएमआई लोन का ईएमआई होता है एंड जो रेंट होता है मंथली वो जनरली इक्वल होता है और बहुत क्लोज होता है. सो वहाँ पे ये मॉडल बहुत अच्छे से वर्क करता है. इन इंडिया दिस इज नाउ वर्किंग बिकॉज यूजुअली पीपल वट दे आर डूइंग इज इन्होंने क्या किया, लोन लिया, ईएमआई के रूप में जितना भी पैसा देना है उसमें कुछ रेंटल इनकम आया, कुछ अपने पास से दिया, बिकॉज बिल्डिंग वेल्थ ऑलवेज रिक्वायर सेक्रीफाइसेस. बट यहाँ पे yeah, I understand, I'm telling you that only, like you have to pay the loan but you have to pay it in EMIs, and once you have put your real estate on the rent, your EMIs will get paid through that rental income, right? This is what has been written, and this is what Robert Kiyosaki used. And in a recently in a podcast he mentioned he owns 15,000 houses as of now. So this is what the power of credit can work. Usually people लोग क्या करते हैं, क्रेडिट लेकर के डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं. But if you use this wisely, it can be a game changer for you all. So rather we can move to the next slide. Yeah, exactly. Right, And also I hope the point is clear which I made, right? You can spam the chat box of yes. Alright. And also guys, you might think कि अभी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं, but I'll be very frank to say this कि आगे जाके चीज़ें will get technical और इन्हीं grounds पे technical होंगी. So please stay tuned. Bhavya, go ahead. Oh yeah guys, one more thing कि जो मेंटी क्विज़ होगी तो रिमेंबर कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्ट्रिक्टली इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं. सो काइंडली हैव अ लुक एट देम एंड आई होप कि मेंटी में सब लोग अच्छा करेंगे, राइट? सो बीएनपीएल स्टार्ट करते हैं. लाइक बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक है अभी के टाइम्स में, स्पेसिफिकली हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रखा है ये, बाय नाउ पे लेटर. एंड आई मस्ट थिंक कि सब काफी लोगों ने ये चीज सुनी भी होगी, राइट? ईएमआई इज डिफरेंट. बाय नाउ पे लेटर इज जस्ट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. सो मैं बताता हूँ क्या होता है. सो बाय नाउ पे लेटर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स ही है, जिसमें क्या कर रहे हो, कंज्यूमर क्या करता है, परचेजेस करता है और उनके लिए ओवर टाइम पे करता है, बाद में पे करता है, जिसपे इंटरेस्ट भी नहीं लगता, राइट? इंटरेस्ट लग नहीं रहा, ओवर टाइम तुम पे कर रहे हो. अब मैं एज अ कंज्यूमर अगर मेरे को ऐसी चीज मिले जहाँ पे मैं ओवर टाइम परचेजेस कर लूँ और मैं बाद में उसको पे ऑफ करता रहूँ थोड़े थोड़े टाइम में एंड उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगे, तो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए तो बहुत एक बेनिफिटिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट? राइट. सो दिस इज व्हाट बाय नाउ पे लेटर डज. अब ये वर्क कैसे करता है? सो वर्किंग इसकी बहुत सिंपल है. क्या होगा, तुम लोग किसी आउटलेट में गए, वहां पे जाके तुमने परचेजेस करी और वहां पे तुम जैसे ही चेकआउट करोगे यू कैन मेक पेमेंट थ्रू एनी बीएनपीएल ऐप इटसेल्फ, एज यू मेंशन इन दी चैट बॉक्स. सिंपल, मल्टीपल, अमेजोन, इन सब का यूज करके तुम कर देते हो. तो वहां पे तुम्हारी पेमेंट हो गई, एक थोड़ा सा अमाउंट तुमने अपनी पॉकेट से पे किया, बाकी सारा तुम्हारा बीएनपीएल स्कीम में चला गया, जो तुम ओवर टाइम पे करते रहोगे. अब उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, तो तुम्हारे लिए तो एक बेनिफिटिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट? दिस इज हाउ सिंपली द इट वर्क्स. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तुमने पे किया, उसका तुम इंस्टॉलमेंट में पे करते रहोगे और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा. तो तुम्हारी लिक्विडिटी क्या हो रही है, बढ़ गई. तुम्हारे पास कैश नहीं है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, स्टिल यू आर एबल टू मेक परचेजेस, और जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तुम उसको पे ऑफ कर रहे हो. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यार कि स्कीम तो अच्छी है, लेकिन हर एक चीज के टू साइड्स होते हैं, राइट? उसमें क्या होगा कि प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे. सो प्रोज की बात करूं तो तुम्हारी लिक्विडिटी एनहांस हो जाती है. यू कैन परचेज ऑल द आइटम्स, जल्दी परचेज कर सकते हो एंड तो पैसे की भी जरूरत नहीं. सो कोई भी अगर नीड है एंड यू डोंट हैव मनी, सो इट बिकम्स कन्वीनियंट, तुम इससे पे कर लो. दूसरी चीज, इट इज क्वाइट कन्वीनियंट, काफी इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है. सिंपली आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, तो इट बिकम्स क्वाइट कन्वीनियंट फॉर अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव. कॉन्स में एज यू मेंशन, आई कैन सी द चैट्स, इंटरेस्ट लगता है अगर तुम ईएमआई वगैरह ना पे करो. सो कमिंग टू दैट, सबसे मेजर कॉन इसका ये है दैट इससे ना सेविंग्स की हैबिट खत्म हो जाती है और लोग क्या करते हैं, ओवर स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं. ओवर स्पेंडिंग इन व्हाट सेंस?
दे कांट अफोर्ड अ थिंग, लग्जरी आइटम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बीएनपीएल स्कीम में उसको ले लिया, जस्ट बिकॉज दे वांटेड इट, उन्होंने ले लिया। अब उसका जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, उनको बियर करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, जब वो अपनी सैलरीज, अपनी इनकम में से उसको पे ऑफ करेंगे। एंड यस, इट ऑल्सो मेक्स अस इररिस्पॉन्सिबल, सेविंग्स नहीं रहती, ओवर स्पेंडिंग होती है। एंड ऑल एज यू मेंशन कि जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर तुमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी तो तुम पे हैवी इंटरेस्ट लगता है, विच कैन बी एक्सॉर्बिडेंटली हाई। सो ये बहुत ज्यादा टू फेस थिंग है, जहाँ पे प्रोज भी है, कॉन्स भी है, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट जिसको अगर अच्छे से यूज किया गया, सो इट कैन बी रियली बेनिफिटिंग। अगर इसको आप अपनी लिमिट में यूज करो एंड रेगुलरली इसकी इंस्टॉलमेंट दो, देन इट इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड कैन बी रियली फ्रूटफुल फॉर अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। सो राघव, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस यस, 45% इंटरेस्ट नॉट पेड, एज आई मेंशन, वो लगेगा ही लगेगा, राइट? और these are some competitive landscape of BNPL. Specifically, if you see India, तो इंडिया में सिंपल है, मल्टीपल है, इसके अलावा Amazon का भी है, there are a lot of other apps too. As you can see, United States में this concept is really growing, और वहाँ पे काफी ज्यादा competitive भी है। Specifically जितने भी developed nations हैं, अब सबका यही हाल है, be it United States, be it Europe, be it Australia, and जो developing countries है like India, वहाँ पे काफी emerging topic है। एज आई मेंशन, हमारी जनरेशन में स्पेसिफिकली ये काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है आज के टाइम पे। एंड आई होप कि यू गाइज हैव नोन अबाउट इट, यू गाइज नो अबाउट इट, दैट्स ग्रेट। सो आई होप कि तुम इसको अच्छे से यूज करो, बिकॉज इट कैन बी रियली प्रो फॉर अ पर्सन, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू यूज इट, काइंडली यूज इट वाइजली। I think BNPL must be clear to all of you. If yes, then have a spam in the chat. Yes, guys, yes. Okay, so Aditya, over to you. All right, guys. So here comes a topic of personal finance जो usually ignored रहता है until you apply for a loan or a credit card, right? आपका क्रेडिट स्कोर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो यहाँ पे कितने लोगों के पास ऑलरेडी पैन कार्ड है? You can write in the chat box also. Alright. Many of you have. So have you ever checked your credit score? Those who have it. No. All right. So just as yeah, stable. That is CIBIL, not SIBIL. No. So any guesses? If you are gonna check your credit score right now, what will it come out to be? Like just a guess, because you can see zero. Okay. Any other? Okay. So like I would request you all to listen to this thing very carefully, because यहाँ से एक question for sure आपको देखने को मिलेगा. 684 without borrowing anything. It cannot be possible, Cherish. You need to check it out on the civil website कि कोई ना कोई गलत allocation हुआ है आपके पैन कार्ड पे. All right. So first of all, let me clear this out. अगर आपके पास कोई भी credit history नहीं है, like if you do not have a credit history, like आपने कोई भी आज तक कोई क्रेडिट नहीं लिया, your credit score will come out to be -1. अब ये -1 का क्या चक्कर है? Actually the thing is, as you guys mentioned कि zero होगा, your credit score comes zero when you have a credit history, but it is not older than 6 months, right? अगर 6 महीने नहीं हुए आपको क्रेडिट लिए हुए, then obviously it will come out to be zero. उसके बाद में आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ट्रैकिंग दो 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस, योर क्रेडिट स्कोर विल गेट अपडेटेड इन अ रेंज ऑफ 300 to 900, राइट? सो बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर एक लाइक मेजरमेंट है कि आपका पैसों के साथ कैसा आपका affects decision. Yeah, obviously you can see that meme in the slide also, when you have a poor credit score but the bank says, I hope everyone knows what the guy is saying. So yeah, the point I was saying is that credit score is nothing but
a measurement of your credit worthiness. Now, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करते हैं, यूजुअली दे आर इग्नोर्ड, और लोगों को लगता है कि सिर्फ एक या दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली एज यू कैन सी ऑल्सो देयर आर 5 फैक्टर्स, स्टार्टिंग विद द पेमेंट हिस्ट्री. नाउ, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है सपोज, या कुछ भी क्रेडिट लोन चल रहा है कोई बैंक का या समथिंग लाइक दैट, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, लाइक अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इफ यू आर पेइंग जस्ट द मिनिमम अमाउंट ड्यू, आई गेस यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू का क्या मतलब होता है, आई गेस इट इज क्लियर, एंड इफ नॉट देन आई एम टेलिंग यू. क्रेडिट कार्ड्स में जनरली क्या होता है, लाइक इफ यू हैव अ लिमिट ऑफ 50,000 और आपने उसमें से 10,000 स्पेंड करा हुआ है, नॉट इंस्टॉलमेंट शुभम, इट इज नॉट इंस्टॉलमेंट, इफ यू हैव स्पेंड 10,000 आउट ऑफ इट, देन जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू होता है तो दिस से कि अगर आप 2,000 भी पे कर दोगे, देन विल नॉट चार्ज यू एनी इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ पे क्या होता है, डेट ट्रैप की सिचुएशन भी बनती है कि अगर आप बार बार मिनिमम अमाउंट ड्यू करते चले जाओगे, पेमेंट करते चले जाओगे, तो आप एक अल्टीमेटली एक ट्रैप में फंस रहे हो कि आपको अल्टीमेटली बाद में, या विशियस साइकिल, करेक्ट, तो अल्टीमेटली बाद में आपको पे करना पड़ेगा. सो इस चीज का कि आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट हैज अ 35% इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर. नेक्स्ट वी हैव द अमाउंट ओड. द अमाउंट ओड में क्या आता है कि लेट्स सपोज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 फॉर एग्जांपल, एंड आपने उसमें से 45,000 यूज करा हुआ है. सो इन दैट केस क्या होता है, इट शोज दैट द पर्सन इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट टू अवेल. लाइक अगर उसने बैंक को यहाँ पे ये लगता है कि अगर वहाँ पे उसने 1 लाख की भी आपको लिमिट दी होती, तो दैट वुड यू वुड हैव यूटिलाइज्ड इट टू अप टू 90,000 और समथिंग लाइक दैट. तो देयर इट गोज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि वो आपका जो स्पेंड होता है वो आपकी क्रेडिट लिमिट से 50% से ऊपर ना हो कभी भी, एंड इफ इट गोज देन यू रीपे इट ऑन टाइम विदाउट फेल. थर्ड इज द लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री. अब एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो पर्सन है ए एंड बी. A has a credit history of 5 years, कि उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री इन द सेंस कि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड या कोई लोन उसका 5 साल से चल रहा है एंड वो उसको रेगुलरली पे करता जा रहा है. Whereas a person B has a credit history of only 1 year, जहाँ पे उसने प्रॉपरली पेमेंट तो करी है बट स्टिल सिर्फ 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है. सो व्हाट डू यू थिंक, किसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा? आई वांट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. First one, A. Okay. Correct. You all are correct. So the point here is the longer the credit history, better is the probability that your credit score will be well if you have not made any defaults in the payment of your credits. Now next in line we have types of credit. अब सबको पता है कि क्रेडिट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा था कि बैंक लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, एग्रीकल्चर लोन हो सकता है, और क्रेडिट कार्ड्स तो हैं. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं एंड आपका जो पेमेंट्स है या उसका एडजस्टमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे से आप मैनेज करते आ रहे हैं, तो दिस गिव्स एन एश्योरेंस कि आप मनी के साथ काफ़ी कॉशियस हैं. सो इफ यू आर वेरी कॉशियस, different I'm stating what I'm stating here is that you have various lines of credit, not multiple credits from single line. There's a difference which you will get to know in the next point. So here but the point was, if you have multiple credits then and you are able to manage them, you are probably going for a good credit score. Now last one is the new credit. Here let's take an example. एक person है, उसके पास ऑलरेडी 5 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एंड वो बैंक जाता है और वो 6 क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करता है. सो हेयर व्हाट कम्स आउट टू बी डेंजरस फॉर योर क्रेडिट स्कोर इज कि आप ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं क्रेडिट्स को लेकर के, एंड आप अननेसेसरीली क्रेडिट्स को अवेल करना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे लाइन ऑफ क्रेडिट हैं अनयूज्ड, बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ न्यू क्रेडिट, एंड दैट क्रिएट्स अ साइन ऑफ फ्रॉड. बिकॉज आप सबने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना, क्रेडिट कार्ड्स के ऐसे भी फ्रॉड होते हैं कि आपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे करा एंड यू आर जस्ट रोटेटिंग दैट मनी without even paying to one of the bank for a very long time. Exactly, these are the loopholes in the credit sector. Can we move to the next slide, Carlo?
आई होप यहाँ तक का क्लियर है सभी को. इफ यस देन यू कैन जस्ट स्पैम द चैट बॉक्स. Great. So next comes how can you improve your credit score. So अब देखो, but there are charges for balance transfer. There are charges, but ultimately you are not paying the substantial amount, right? So I hope that's clear. So now next is how to improve your credit score. अब आपका credit score, sorry, और नेचुरली ये है कि अगर आज आपके पास आप सो आपका क्रेडिट स्कोर खराब किस किस वजह से हो सकता है वो अभी हमने डिस्कस करा पिछली स्लाइड में. अब इफ यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू दोज पॉइंट्स, तो उसके बाद में बस एक ही चीज बचती है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकती है. विच समवन इन द चैट बॉक्स आल्सो मेंशन कि उसका क्रेडिट स्कोर इज 648 विदाउट एनी क्रेडिट, व्हिच इज अ एरर इन द क्रेडिट रिपोर्ट. कोई और लोन था, किसी ने आपका पैन कार्ड का नंबर रैंडमली पुट करा और वो आपको एलोकेट हो गया एंड विच इज नॉट बीइंग पेड प्रॉपर्ली. इससे आपका क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है. अब उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिबिल की अपनी वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको पेइंग टाइम भी वेल वहां पे जाके यू हैव टू रेज अ कंप्लेंट और वहां पे डालना पड़ता है कि दिस क्रेडिट डज नॉट बिलोंग्स टू मी एंड वो भी करेक्ट हो जाता है. तो अल्टीमेटली क्रेडिट स्कोर को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए दोस 5 फैक्टर्स अलोंग विद दिस नॉलेज कि आपके अगर क्रेडिट स्कोर पे कोई अनवांटेड या अनऑथराइज्ड कोई लोन आपके पैन कार्ड के ऊपर एलोकेटेड है तो आप उसको भी ठीक करा सकते हैं. तो देयर यू नाउ हैव सफिशिएंट नॉलेज कि आपका क्रेडिट स्कोर किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रहा है और आप कहाँ उसको सही करा सकते हैं. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ. All right. Perfect, guys. Bhavesh, you can take it. Sure. I hope credit score का सारी चीजें we must be clear with it. As Aditya mentioned, कोई भी doubt है, we will be taking it at the end of the session for sure. So let's just move to the most awaited topic, I guess, and one of the most trickiest topic as well, taxation. So पहले बताता हूँ टैक्स क्या है. सबने सुना है, बहुत कॉमन वर्ड है, आज के टाइम पे बहुत चलता भी है कि गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, इनकम आ नहीं रही, टैक्स बढ़ता जा रहा है. तो उसी चीज को थोड़ा डिकोड करते हैं अभी. सो टैक्स बेसिकली होता क्या है, एक तरीका का फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से टू एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू इटसेल्फ. और वो किस पे लगता है, आपकी इनकम पे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज पे, आपकी वेल्थ पे, राइट. Great, guys. As you mentioned, compulsory payment to government, leading to reduction in disposable income. Yes. पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से देखें तो यस, टैक्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी इनकम के ऊपर, क्योंकि उससे जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो बहुत ज्यादा कम हो सकती है. जितना ज्यादा हम टैक्स देते जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी इनकम कम होती जाती है, उतने कम हम एक्सपेंसेस कर पाते हैं. बेसिक दो टाइप होते हैं टैक्सेशन के, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. सो डायरेक्ट टैक्स जो आपके डायरेक्ट इनकम पे, आपकी वेल्थ पे लगता है, राइट. एंड उसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे लगता है, आपकी अर्निंग्स पे लगता है, राइट. इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट होते हैं नेचर, मींस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, और उनका जो इंसिडेंस होता है वो किसी पेई की इनकम पे नहीं होता, रेदर देन किसी और दूसरे पर्सन के ऊपर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएसटी में क्या होता है, जो बिजनेस ओनर है वो जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन जो उसका इंसिडेंस आ रहा है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जीएसटी. इससे पहले वैट वगैरह भी होता था, लेकिन वो सब जीएसटी में इंक्लूड होता है. सो ये नाउ अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू गाइस. जीएसटी मेंशन हुआ है तो जस्ट स्पैम इन द चैट बॉक्स कब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. द डेट ऑन विच जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. 2017. 1st July, yes. 1st July 2017 is the right answer. Great, guys. Great. Yeah, great. सबने इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी है, सबने जीएसटी और बजट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, राइट. Great work, guys. Raghav, we can move to the next slide.
बाय नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स. सो अब जीएसटी पे थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं और थोड़ी टेक्निकलिटीज भी देख लेते हैं. सो जीएसटी के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, डिवाइड होता है. सबको पता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. तो क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं. लेट सपोज अगर जीएसटी रेट है किसी कमोडिटी पे 18%, तो और वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब अगर मैंने यूपी में वो ट्रांजेक्शन करी है तो परचेज भी वहीं पे हुआ, कंज्यूम भी वहीं पे हुआ, सब कुछ वहीं पे हुआ है. तो उस केस में क्या होगा, 18% को एसजीएसटी 9% हो जाएगा, सीजीएसटी भी 9% हो जाएगा. स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. सिंपल है, बहुत सिंपल हो जाता है. दिस इज ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. इंटर स्टेट विद इन स्टेट हो रही है, इसलिए इट इज विद इन दी स्टेट हो रही है, दैट्स वाई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा. दोनों का बाइफर्केशन वहीं पे हो जाता है. आईजीएसटी में क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन आउटसाइड वन स्टेट होती है तो वहां पे आईजीएसटी लगता है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है. उसके बाद जाके डिविडेशन होता है. अब इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ. लेट सपोज मैं एक क्लोथ मर्चेंट हूँ दिल्ली में, एंड क्या हो रहा है, मैं क्लोथ मर्चेंट हूँ दिल्ली में, मैं रेडीमेड क्लोथ का मर्चेंट. अब अगर मैं दिल्ली में ही किसी कंज्यूमर को देता हूँ और वो कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट होके जाएगा. लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अपना जो रेडीमेड क्लोथ का एक शिपमेंट है वो मैंने भेजा यूपी में. अब क्या हो रहा है, दिल्ली से यूपी जा रहा है, स्टेट चेंज हो गया. अब इस केस में क्या होगा, क्या कौन सा टैक्स लगेगा गाइस, स्टेट चेंज होने पे कौन सा टैक्स लग रहा था, आईजीएसटी. यस, इस केस में आईजीएसटी लगेगा. अब इसमें आईजीएसटी फंक्शन कैसे करेगा, मैंने जीएसटी वगैरह पे किया गवर्नमेंट को, उस केस में क्या होगा, सारा टैक्स गया गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी के फॉर्म में. उसके बाद गवर्नमेंट उसको बाइफरकेट करेगी, सेंटर वाला अपने पास रखेगी, और एसजीएसटी जो होगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो एसजीएसटी वाला कंपोनेंट होगा उसका, वो कहाँ जाएगा, उस स्टेट में जाएगा जहां पे वो कंज्यूम हुआ, दैट इज यूपी में जाएगा. दिल्ली को नहीं जाएगा, यूपी में जाएगा, बिकॉज वो कंज्यूम यूपी में हुआ. सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई वुड रिपीट वंस अगेन, जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट में एसजीएसटी उसका जाएगा, इन केस ऑफ आईजीएसटी, राइट. कंजम्पशन पे, बिकॉज जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर इंसिडेंस आते हैं. सो दिस इज द बेसिक बाइफिकेशन ऑफ इट, राइट. सो आई होप कि जीएसटी वाला टॉपिक मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन टेक इट एट द एंड. यस यस, ग्रेट गाइस. सो जीएसटी की वर्किंग समझ आ गई. अब उसके टीयर्स देख लेते हैं. जीएसटी के जो स्लैब रेट्स हैं सबको बताऊंगे, ऑब्वियसली 5, 12, 18, 28, एंड उसके आइटम्स भी यहाँ पे एज इट इज मेंशन्ड है, किस पे क्या लगता है. अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे देखो 28% पान मसाला एंड टबैको पे. अब यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी सबको पता होगी, एंकरेजिंग एंड डिस्करेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. गवर्नमेंट किसका प्रोडक्ट का कंजम्पशन कराना चाहती है और किसका कम करना चाहती है, वो किस चीज से कम ज्यादा करती है, टैक्सेस, एक्सटर्नलिटीज. यस, वो टैक्सेस से कम ज्यादा करती है. अब यार पान मसाला टबैको बैन तो कर नहीं सकती गवर्नमेंट, सो वो क्या करती है, उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोगों के लिए वो खरीदना महंगा हो जाता है, जो उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे, और जो गवर्नमेंट का हेल्थ वाला ऑब्जेक्टिव है वो सही हो जाएगा. की रेवेन्यू सोर्स, यस, टैक्सेस आर ऑब्वियसली रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा सही. गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस, लेस कंजम्पशन. बहुत सही चीज है, टैक्स बढ़ेगा उस चीज का कंजम्पशन कम हो जाएगा. बेसिक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि टैक्स बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस विल गो अप, और प्राइस ज्यादा जाते हैं तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट facet of government working specifically in case of taxes. So with this, we can wrap up the GST topic. We have learned about IGST, CGST, and SGST, also about the slab rates. I hope everything will be clear to all of you. If yes, then spam yes in the chat box. Great, great, great. Great, 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 guys. Great, great. Yeah, great suggestions, guys, all together. And it was really great to see you guys answering this well. So with this, if everything is clear to all of you, we can move on to the next slide.
And Aditya, over to you. All right, guys. We are now moving towards a topic जिसके लिए even Albert Einstein once said that this is the hardest thing to understand in the world, that is income tax. So let's try to understand it a bit. Now, see, as you can see in this picture also, कि अगर आप कुछ भी earning कर रहे हो, the government wants its part from that, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि अगर हम कुछ भी अर्निंग कर रहे हैं तो वो चार्ज किस हेड में हो रहा है लाइक फॉर हियर यू कैन सी दैट देयर आर बेसिकली फाइव हेड्स ऑफ इनकम in income tax, starting with the salary, which is quite obvious that any income you earn by the means of salary will be charged under this head. Now next is business or profession. अब कल के सेशन में यू मस्ट हैव हर्ड लाइक ट्रेडिंग के बारे में भी बात हुई होगी, इवन दो आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द सेशन, ट्रेडिंग के ऊपर बात हुई होगी. सो द इनकम यू आर अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग इज आल्सो चार्ज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन. व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस? बिकॉज यूजुअली पीपल थिंक दैट इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग इज इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड वो हमारा कैपिटल गेन्स में जाएगा. बट अल्टीमेटली होता क्या है, जो आपका बिजनेस और प्रोफेशन है, यूजुअली अगर किसी का कोई भी बिजनेस है उसकी इनकम तो पीजीबीपी में आती है, दैट इज प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें आएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका ट्रेडिंग से इनकम आता है वो भी आपका बिजनेस माना जाता है इन इनकम टैक्स और पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द हाउस प्रॉपर्टी थिंग. हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइक एनी रेंटल इनकम यू अर्न. लाइक हमने जो अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, व्हाई आई वाज सेइंग थिंग्स विल गेट टेक्निकल ऑन दोस ग्राउंड्स ओनली बिकॉज़ यू कैन सी इट हियर. अब the point that we learned there in the credit creation, wealth creation wala cheez, ki you can get rental income unlimited from that thing. But yes, monthly dividends get taxable in the other sources. We'll come to that. So yeah, in house property, which income is taxable, you find out the rental income. Any rental income you're getting, be it from your own house or from the house of your spouse which you have transferred on her name for example. So वहाँ पे जितनी भी इनकम आ रही है रेंट की, that is charged in your house property. Yeah. Next we have the capital gains. Now stock market की फिर से कल वाले सेशन पे आते हैं कि कल स्टॉक मार्केट की काफी बात हुई. लाइक ट्रेडिंग छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, या कैपिटल गेन टैक्स इज चार्ज इन कैपिटल गेन्स. फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर आपने 12 मंथ से ऊपर तक होल्ड करके उसके बाद उसको बेचा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. इट इज चार्ज अंडर सेक्शन 112A. एंड अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर कोई शेयर आपने बेच दिया, देन इट बी चार्ज एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A. नेक्स्ट वी हैव द अदर सोर्सेज. नाउ अगर आपकी इसके अलावा और कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से डिविडेंड आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, या फिर कहीं से आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस आ रही है, कुछ भी इस तरह की चीजें, देन यू गेट दोस थिंग्स चार्ज इन द अदर सोर्सेज एक्सचेंज. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इट इन सिंपल टर्म्स. इफ यस, यू कैन पुट अ yes in the chat box. Glad to see so many yes in the chat box. We can move to the next slide. Now फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी के मन में क्वेश्चन हो कि आपको कैसे टैक्स नहीं देना, तो यू कैन सी दैट गाय सेइंग दैट you don't pay income tax if you don't have income. That is the only possible thing in India if you don't want to pay taxes. But still government ने बोला चलो आपको थोड़ा सा राहत देते हैं टैक्सेस में. Like I want to know कि how many of you think कि कितने इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता इंडिया में? You can write it in the chat box. 3 lakhs, okay, till 3 lakh, okay. All right, so basically you just saw on the screen new budget 3 lakh. All right, 5 lakhs, okay. Let me just clarify that. I have got multiple mix of answers, someone saying 3 lakh, 5 lakh, 7 lakh. So yeah, this is something which we need to know, because see, from this year onwards, like from the financial year 23-24, there will be
two tax regimes with different basic exemption limits, right? New policy till 3 lakhs, correct? So the point here I'm making is, अभी तक आज इस साल से पहले तक what was going on is, जो आपका दो regime थे, old and new, दोनों में basic exemption was till 5 lakh, right? Why I am saying 5 lakh, आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2.5 lakh लिखा है, but there is a rebate कि अगर किसी की income up to 5 lakh है, then they do not need to pay taxes, government उस पर rebate दे देती है, all right? So इस साल से क्या किया है, नई जो टैक्स पॉलिसी आई है उसमें इस रिबेट को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक ले गए, बट देयर इज अ कैच. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 7 लाख है, सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, राइट, एज ऑफ नाउ. उससे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज मैं ये आपका आज का सेशन ले रहा हूँ. फॉर दैट FIC KMC इज गोइंग टू पे मी 1 लाख रुपीस, ऑलराइट. From other sources, I have an income of, let's say, 10 lakh rupees. So, according to you guys, which scheme should I opt for? Old or new? Let's see. New, old, new. All right. Again, a mix of answers. New and old. So, okay. So before deciding on the new and old, one thing I want to make it very clear. जो इनकम टैक्स में आपका जो इनकम चार्ज होती है, लेट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को FIC KMC 1 लाख रुपए दे रही है फॉर टेकिंग दिस सेशन. सो यहाँ पर 1 लाख रुपए जो मेरे को मिलेगा वो मेरी इस साल की इनकम है, दैट इज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24. बट इनकम टैक्स इसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर 23-24. You can take a minute, you can think it, you can write it down, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं इस टाइप से. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इनकम टैक्स में ईयर्स को डिफाइन बहुत अलग तरह से किया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आफ्टर ऑल फ्यूचर में जब आप टैक्स भरेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा साल की इनकम कब टैक्सेबल होगी. सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई विल रिपीट. The point I'm trying to make is, if I am earning this income today, like जो मैंने 1 लाख वाली बात बोली कि मेरे को 1 लाख रुपए देगी FIC KMC, so वो जो बात है, that income I am earning in financial year 23-24, correct? I hope you all guys, everyone knows about financial year. Financial year clear है. So जिस financial year में I am making that income tax में उस year को previous year बोला जाता है. This is what I mean to say. एंड जो इनकम मैं इस पूरे साल में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में या इस पूरे प्रीवियस ईयर में मैं अर्न करूंगा, उसका टैक्स आई विल बी पेइंग इन द नेक्स्ट ईयर, जिसको कि असेसमेंट ईयर बोला जाता है. असेसमेंट ईयर 23-24 विल बी दिस ईयर, राइट, जो कि होगा असल में फाइनेंशियल ईयर 23-24-25 में, बट उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर 23-24. आई नो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट येट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वो चीज समझ आए. ग्रेट टू सी दैट यू गॉट इट. You have to file ITR in the next year, ना? That is what I am trying to make you understand कि जब आप next year में ITR file करोगे तो that will be your assessment year for your previous year. इसके अलावा अगर इस पे और कोई doubts हैं तो we'll take it in the end. As of now, I think we can move on to the next slide to decide कौन सा better था मेरे लिए, new और old. Now, आपने ये मीम जरूर देखा होगा, I believe, जब बजट आया था and all that stuff. तब आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार पहली 3 पिक्चर में तो बहुत खुश है, उसके बाद ही इज क्राइंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो. आप सबने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना कि इनकम टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस एंड रिबेट्स होते हैं जो लाइक कुछ लोगों को अवेलेबल होते हैं. यस, ओके. सो उन रिबेट्स में से कुछ रिबेट्स ऐसे हैं, कुछ क्या आई वुड से कि कुछ डिडक्शंस, नॉट रिबेट वोंट बी द राइट वर्ड टू यूज, बट कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो एक्चुअली आपका जो ओल्ड टैक्स स्कीम है उसमें तो अवेलेबल है, बट न्यू टैक्स स्कीम में वो अवेलेबल नहीं कराए गए. फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं रिबेट अंडर सेक्शन बोल रहा था कि 5 लाख तक इनकम में छूट मिल जाती है, दैट इज अवेलेबल फॉर बोथ द स्कीम्स. उसके अलावा जितने भी स्कीम डिडक्शंस हैं, बी इट योर हाउस रेंट अलाउंस,
LTA. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक द मीनिंग ऑफ डिडक्शंस वेरी क्लियर. ये डिडक्शंस वो होते हैं कि आपने अगर कोई जेन्युइन एक्सपेंसेस किए हैं तो वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो सैलरी आती है सपोज, या कोई इनकम आप अर्न कर रहे हैं, वहां पे जितनी भी इनकम है उसमें से ये एक्सपेंसेस लेस होकर के फिर टैक्स आता है, तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी अल्टीमेटली कम आती है. मूविंग बैक टू द पॉइंट, जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस है या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस है, LTA जिसे कहते हैं, और सैलरी वालों को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है उनकी इनकम में से, जस्ट फॉर द सेक कि आपका एक्सपेंसेस मिनिमम 50,000 तो है. सो यू कैन चेक आउट दिस लिस्ट. इसमें इतने सारे डिडक्शंस ऐसे हैं जो न्यू स्कीम में एक्चुअली नहीं है. सो अल्टीमेटली जो 5 to 7 लाख का जो 2 लाख का डिफरेंस है, which this outperforms your the deductions which have been removed. जो आपके डिडक्शन जो है रिमूव हो गए हैं, that outperforms the benefit which a taxpayer will draw from opting the new scheme. So the correct answer for my case was I should have opted for old scheme only, right? Also a bit more clarity on this. अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है CAs का एंड ऑल, that is based कि अगर आपकी इनकम is going above 20-25 lakhs, so आपको न्यू स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्स रेट्स, एंड अगर उससे नीचे है तो इट इज़ बेटर फॉर ऑप्टिंग ओल्ड टैक्स रेजिम. सो आप अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में अब आई होप कुछ गाइड कर पाएंगे इन केस ये दे आर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न बाय देयर ओन. तो आई होप आपको कुछ हेल्पफुल होगा. We can move to the next slide, and I would like to see yes in case these things are clear. All right, and don't worry, in case you have any questions we can take up them in the last, right? Okay, so we are coming to the end of the like discussions. Now you can see this gentleman, what he's saying is that you can lower your taxes legally, right? अब उसके पीछे भी like there is a proper thing called tax planning. At the same time tax evasion भी एक चीज होता है जिसको कई लोग simultaneously यूज कर लेते हैं कि हमारा these two things are the same, but there is a vast difference and वो समझना is very important, right? तो टैक्स प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है, अभी भव्या ने स्टार्टिंग में he told you about insurance, various insurance, LIC and all these things. तो क्या होता है, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, दैट योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई. सो टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, अभी आई वाज डिस्कसिंग ऑन द प्रीवियस स्लाइड अबाउट डिडक्शंस. तो डिडक्शंस में some of the deductions are based on your insurance policies also, like ATC is something जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी है तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, राइट? ऐसी 80D इज समथिंग जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है. सो पॉइंट हियर इज, अगर आप इंश्योरेंस को लेकर के रखते हैं तो नॉट ओनली आपका रिस्क से आप सेफ होते हैं, बट ऑल्सो आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलते हैं. Correct. Under section 80G, if you donate to registered trust, you get tax relief. So this is what is a part of tax planning. Tax planning में क्या होता है, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है and you want to get to a lower rate, यहाँ पे मार्केट में क्या चलता है, you donate your money to the political trust or registered trust. What they do is they charge a percentage commission and return you back the money in cash. I know this is not right. It is like something जो 1 नंबर से 2 नंबर में आता है. अब दिस इज व्हाट फॉल्स अंडर टैक्स इवेजन. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपने एक्चुअली टैक्स आपका ज्यादा बनता था, बट इलीगल मीन्स से आपने उसको, इफ यू आर डोनेटिंग इन फुल, अनएथिकल, करेक्ट, इफ यू आर डोनेटिंग इन फुल, लाइक आपने डोनेट करना है एंड यू डू नॉट टेक कैश बैक, दैट कम्स अंडर टैक्स प्लानिंग. लेकिन अगर आपने डोनेट करके उसको कैश में वापस लिया, दैट कम्स अंडर टैक्स इवेजन. I hope I'm making sense, right? So basically tax planning is completely legal, whereas tax evasion is completely illegal. You cannot protect yourself or defend yourself in front of authorities in case your tax evasion comes out to be true. Now tax planning क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, is something which is a matter of deep understanding, जिसको we cannot take deep in this session as of now, but we'll surely think अगर future में as such कोई session हम arrange कर सकते हैं for you guys. Now
Moving on to the next slide. Yeah. So टैक्स प्लानिंग की भी बात हुई, श्योर भैया। अभी हमने टैक्स प्लानिंग की बात करी, बट आई वांट टू नो यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो ओके, एनीवन एल्स? some of them are doing. So आपकी टैक्स प्लानिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी जो जितनी भी टैक्स प्लानिंग है वो इन क्रिप्टोज एंड लॉटरीज में नहीं चलती। द गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्टली सेड कि आप चाहें उसमें कितना भी लॉस करें, अगर आप 10 रुपए का भी प्रॉफिट कमाएंगे तो यू हैव टू पे 3 रुपीज एज इनकम टैक्स। वेरी क्लियरली इट हैज बीन स्टेटेड। So this is the point I'm trying to make here is कि टैक्स प्लानिंग हर जगह नहीं चलती। At the same time अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसको लगाएंगे, then it can do wonders to save your hard earned money and it will pay for it. You can do, but ultimately आपका जो पर्पस था उसको ट्रेड करके पैसा कमाने का और उसके बाद उससे एंजॉय करने का, वो तो आप फुलफिल नहीं कर सकते। As soon as you want to withdraw it, you will have to pay the taxes, like वो automatic TDS कट के आता है, if you know the term TDS। अभी हमने इस सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं करा because it is quite technical thing, but for sure like I mentioned आगे कभी सेशन होता है तो we'll surely incorporate these things। So with this I think we come to an end। tax deducted resource। So I hope I was able to make you understand जितने भी points हमने cover करे। I hope it was quite clear। Perfect, perfect। All right, guys, we'll take up your doubts after the Menti quiz is done। So over to you, Rahul। Thank you। Yeah. Everyone, let's spam claps for this wonderful speaker session. Really, a very well explanation by our speakers. They were way too good, guys. Thank you. Now, hoping you are done with your assignments, I request all the participants to tighten their seatbelts for the Menti quiz, because we now know that right answers are not enough to win. You need to be prompt. Keep your eyes on the chat box. Link will be floating soon. So all the best to everyone. Over to Menti quiz hosts. All right, so hi guys, hi everyone. Okay, so you guys have learned a lot in these past 3 days, right? So now it's like final time to test your all knowledge. Day 3's final Menti quiz. So let's start, and I just want you all to make sure that you don't use any other refrain from using any other resources for the quiz. Let it just be fair. All right, so let's start the Menti quiz now. Okay. Okay, so welcome to the quiz. Okay, so let's start the first question. Get ready, everyone, join in. Okay, we have 30 players ready, 31. Okay, all right, so let's start. Okay, the first question here on your screen, it is. Yeah. All right, on to the first question. Under GST, which of the following taxes have been subsumed? And the options are value added tax, service tax, central excise duty, and all of the above. All right, so I see that everyone has already voted before the time could actually finish. And 16 of you have gotten the right answer, 16 of you didn't. So it's 50-50. All right, so let's just move on to the leaderboard. Okay, let's see what dynamics leaderboard shows. All right, so Mahi was the fastest, and on the top 3 we have Mahin, Mahi, Jubin, and Jerish. So guys, you people are 32 people, and on the leaderboard there is just place of 10. So I want to see everybody's name at least once on the leaderboard. All right, so moving on to the second question. 33 players ready. All right, so okay, let's go. What is a secured loan? And the options will soon be displayed on your screen.
A loan where the interest rate is fixed, a loan that requires collateral such as car or house, a loan with no repayment terms, a loan exclusively for business purposes. Well, Okay. Jubin looks like he's gonna win today also, and he's on the second spot. So, guys, hurry up, time is up now. All right. So we have 25 people who've got the right answer. Great going. All right. So let's see the leaderboard now. Um, okay. So I believe Jubin, no, Cherish was the fastest this time. All right. So the three positions, top three positions are changing. And all right. So let's move on to the third question. And all the players are ready. On to the third question. All right, question number three. How does an asset typically need to be held to qualify for long term capital gain tax treatment in most countries? Less than 1 year, 1 year or more, 2 years or more, 5 years or more. This is a pretty easy questions, guys. Let's go. Yeah. Okay. Almost all of you have answered. 25 you've gotten the right answer, just like the previous question. Let's see what the dynamics of the leaderboard say now. All right, Jerish was the fastest again. All right, so the top three positions have changed now. It's Jerish, Samath, and Khyati. Let's go. The competition is between them. All right, on to the fourth question. In GST framework, what is the purpose of GSTIN, Goods and Services Identification Number? Guys, this was covered in today's class, and I hope all of you will get it right. Okay, 10 seconds left. People are answering. Quick. The fastest gets the more points, guys. Just know that. All right, 32 of you have answered. All right, so 15 of you have gotten the right answer, which was option B. Let's see what the leaderboard says today. Okay. The dynamics have changed a lot. Okay, so Mahi is the fastest this time, and on the top we have Mahi, Danya, and Nihal. I see many people changing. Like, good going, guys. Competition, nice. So on to question 5. What is the purpose of a credit score? Well, this was covered just right now, and I'm sure you could get it right. To determine how much money you have, to measure your ability to manage and repay debts, to assess your total income, to calculate your tax liability. Within 5 seconds, almost all of you had voted. So I guess this question was quite easy, and all of you got the right answer. Well done, guys. Good going. So let's see what the leaderboard says now. Okay, Watson was the fastest, and on the top we again have Mahi, Danya, and Nihal. Come on, guys. Let's just buckle up. And change the dynamics for once. Yeah, almost half of the quiz is done. We're halfway there, and it's the last quiz. So yeah. What is the financial year in India for income tax purposes? January 1st to December 31, April 1st to March 31, July 1st to June 30th, and everybody has already voted. Within 5 seconds, almost all had voted. 29 of you got the right answer. Well done. Okay, let's see what the leaderboard says now. So Watson was again the fastest in its last three. I think there's some issue with Optima's screen, I guess. Don't worry, guys, your scores won't be affected. It will be soon presented. Your quiz got disconnected. Please wait, guys. We are having a look at the matter. Sorry for the inconvenience. Sia, if you have the access, kindly you can
start with that if you're having the access to it. All right, so I'm sure everyone can see the screen. Quickly type yes in the chat box. Before starting, let's just reconfirm if the quiz has been reconnected, right? All Perfect. right. Perfect. Now on to the seventh question. What is the term for amount of money you pay for insurance coverage? Deductible, premium, claim, or policy? Well, this was a fairly easy one and everyone has already voted. And the answer was premium. Well, the guys who answered deductible, I guess you should not hurry and make sure your answers are right. And Jerish was the fastest. Mahi, Dhanya, and Nehal are not ready to leave their spots. All right, on to question number 8. Which of the following is considered long-term investment? Holding a stock for 6 months, holding a stock for 1 year and a day, and everyone has already voted. I guess this was the easy one. Yet some of you have gotten it wrong. Well, guys, you need to make sure you answer correct, because even if you answer quickly and your answer is not correct, you'd be getting 0 points. And looks like Jubin was the fastest. And again, Mahi, Danya, and Nehal are controlling the dynamics of the leaderboard today. On to question number 9. 31 players are ready. And the question is on your screen. What is the Integrated Goods and Services Tax, IGST? Tax levied on imports of goods and services, tax levied on luxury goods services, a tax levied on interstate movement of goods services, a tax, and everybody has already voted. And this was something we learned just right now. No? And looks like Nihal was the fastest to answer this question. Jubin is climbing upstairs. Well, you can do it, Jubin. Yesterday you were the first, and today you're letting someone else take the spot. Well, you should claim what's yours. On to question number 10, and 31 players are ready. What is your credit score if you do not have a credit history? Well, abhi cover kiya ye, and everyone has already voted, I guess. And the answer was -1. And on to the leaderboard now. Looks like Mahi got this one wrong and she'll be moving down the leaderboard. And Danya is the winner. Well, this was a surprise for us. Congratulations, Danya. Well, you did not dominate the leaderboard overall the quiz, but jo jeeta wahi Sikandar. So, thank you very much for gaining something from our quiz and attending the whole session. Now I'll hand it over to the host. Yeah, what a fun-filled quiz it was. Like there were some interruption, but really I enjoyed a lot seeing you guys play. And like in the end, the position changed like
Manya got means position changed, dynamics changed, like it was amazing. Now, as I promised, we have a special announcement for you all. I invite our Vice President, Mr. Arpit, for the same. Over to you, Arpit. All right, all right. Thank you so much, Raghav. Great work, Aksham and Sia, with the quiz. And of course, the speakers, Aditya and Bhavya. It was an amazing session. Even I heard it today, and I really didn't know about the credit thing, the civil thing initially, but indeed, it was quite an insightful one. Well, guys, we do have something more planned for you for the day 4 of our fellowship. We actually have quite an insightful session with the Vice President of Goldman Sachs planned for you on 2nd of October. So I'd actually request you tomorrow, being a holiday, Sunday, we won't really be continuing with the session, anything related to the session tomorrow. We'll be continuing with it on Monday. Monday being the last day, we'd actually be hosting a session with Mr. Ankur Bhatnagar. He's the vice president at Goldman Sachs. And I actually hope that each of you join us in, because we've got quite some registrations for it. But of course, we'll be prioritizing the fellowship participants for the same. So I hope each of you join us in over there, and you'd be amazed to meet him, of course. So yeah, back to you, Raghav. Thank you so much, guys. Yes, participants, I'm seeing your excitement from your comments. I'm also very much excited. Yeah. Now, very important note that don't forget to complete your assignments because you won't be getting any certificate without it. Now, we are living with the belief that you learned something new today. Meet you tomorrow. Oh, not tomorrow, but day after tomorrow because picture abhi baki hai mere dost. Thank you guys for joining. You can leave now. One thing, guys, 1 minute. I got a lot of concerns about the assessment which was given to you yesterday, and many of you just messaged me and questions about extension of the same. So, considering your all requests, we are extending the deadline for yesterday's assessment to 9 p.m. tonight itself. This is your last chance to complete it, and as you know, without completing it, you won't be eligible for the internship opportunity. And and make sure that this is the last time we are doing it. Today's assessment will not have any extension at all. So make sure you're completing it within time, right? Hoping to see all of you giving a nice assessment at the end.